Alright, so let's start the topic. The topic is interesting. Brand loyalty. Brand loyalty का क्या मीनिंग होता है? When we go to shops, when we want to buy a product, तो प्रोडक्ट देखने के साथ साथ एक ब्रांडिंग होती है. हम एक ब्रांड को देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी. अगर आपने वो चीज को बचपन में यूज किया है, पहले यूज किया है और वो ब्रांड आपको जानी पहचानी लगती है, या आपने उस कंपनी का कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट खरीद लिया है, तो आपकी उस कंपनी के साथ एक दोस्ती हो जाती है और आप उस ब्रांड के लॉयल कस्टमर बन जाते हैं. दूसरी बार जब आपको कोई नई चीज खरीदनी है तो आप पहले उस पर ट्रस्ट करेंगे जिसका नाम आपको पता है, राइट. अगर आप कहीं पे जाते हैं, फॉरेन कंट्री में जाते हैं और वहां पे सारे के सारे रेस्टोरेंट्स में नाम आपको पता नहीं, लेकिन एक रेस्टोरेंट का नाम मैकडोनल्ड्स है, तो मैकडोनल्ड्स में आप पहले चॉइस करेंगे बिकॉज वो आपको घर का लगे. उन्होंने कोई आपका भला नहीं किया है, लेकिन आप लॉयल बन जाते हैं. दैट इज कॉल्ड ब्रांड लॉयल. सो लेट्स लुक एट द मीनिंग. द फर्स्ट वर्ड इज बॉन्ड. बॉन्ड यानी किसी के साथ जो रिश्ता बनता है, वो रिश्ते को बोलते हैं बॉन्ड, राइट. ब्रांड, एज आई सेड बिफोर, ब्रांड इज द नेम ऑफ अ कंपनी, राइट. और वैसी कंपनी का नाम जो बहुत फेमस है बिकम्स अ ब्रांड. बर्जनिंग. बर्जनिंग यानी ग्रोइंग, जो बड़ा बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बर्जनिंग. यानी धीरे धीरे फैल रहा है, दैट इज बर्जनिंग. कॉन्ग्लोमरेट. कॉन्ग्लोमरेट मीन्स बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है, नॉट जस्ट नेशनल बट मल्टीनेशनल कंपनीज. जो कंपनी एक प्रोडक्ट नहीं लेकिन बहुत सारे अलग अलग फील्ड में है, जैसे कि रिलायंस. रिलायंस इज नाउ अ कॉन्ग्लोमरेट. मीन्स वो कंस्ट्रक्शन में है, सेल्यूलर में है, इंटरनेट में है, फैब्रिक्स में है, डेटा में है, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, तो इतने सारी चीजों में इन्वॉल्व है. सो दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट. कंसिस्टेंटली यानी अटके बिना, नॉन स्टॉप, सतत, इट्स कॉल्ड कंसिस्टेंटली. कन्विंस. कन्विंस यानी कोई किसी को कुछ करने के लिए राजी करना, इट्स कॉल्ड कन्विंस. एंडोर्स. एंडोर्स मीन्स एंडोर्समेंट. एंडोर्समेंट यानी जब सेलिब्रिटीज और कोई भी बड़े लोग प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं, यानी वो उसको एंडोर्स करते हैं. फ्लीटिंग यानी बहुत शॉर्ट टाइम का, बहुत कम समय में जो गुजर जाता है, वापस नहीं आता है, इट इज कॉल्ड अ फ्लीटिंग मोमेंट. फ्लीटिंग मोमेंट इज ऐसा पल जो गुजर जाएगा, इट इज फ्लीटिंग. फ्लीटिंग मेमोरीज. इग्नोर, किसी को अनदेखा करना. लॉयल्टी यानी वफादार, यानी कंपनी के अंदर आपकी एक वफादारी होती है कि जैसे आप एप्पल प्रोडक्ट खरीद लिए तो आप हमेशा एप्पल एप्पल ही करेंगे. दैट इज अ ब्रांड लॉयल्टी. आउट परफॉर्म, किसी से ज्यादा अच्छा काम करना, किसी से ज्यादा बेटर परफॉर्म करना, इज कॉल्ड आउट परफॉर्म. पैशन यानी चाहत, कुछ करने के लिए जो चाहत है, दैट इज कॉल्ड पैशन. नेक्स्ट इज फिनोमिनन. फिनोमिनन यानी जो ट्रेंड चलता है, दैट्स अ फिनोमिनन. जैसे आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है, दैट इज कॉल्ड फिनोमिनन. द मीनिंग इज तथ्य. व्हाट इज इट कॉल्ड? तथ्य, दैट इज फिनोमिनन. यानी ये चलन है, कोई चीज का चलन है रेगुलर, दैट इज अ फिनोमिनन. कि इसका चलन है आज के जमाने में, दैट इज अ फिनोमिनन. So that is a phenomenon, right? Like people are following this phenomenon of going to foreign countries nowadays. बाहर जाने की प्रथा हो गई है, चलन हो गया है, उसका चलन है, that is a phenomenon. यानी पूरी दुनिया में वो लोग कर रहे हैं, that is a phenomenon. Prevail. Prevail का क्या मीनिंग होता है? जो चल रहा है, again prevailing trends, that is called prevail. Again जो चलन में है, that is called prevail. That is why I say in the prevailing time. जो हर जगह पे है, हर जगह पे उसका उसका अस्तित्व है, सबसे आगे है, तो दैट इज प्रिवेल. ऐसे बोलते हैं कि सच्चाई की जीत होगी, तो इंग्लिश में बोलेंगे द ट्रूथ विल प्रिवेल. जीत होगी यानी वो आगे बढ़ेगा, आगे चलेगा, दैट इज प्रिवेल. प्रमोट. प्रमोट यानी कोई चीज को प्रमोट करते हैं, दैट इज प्रमोट. बढ़ती देना, वी कॉल इट, किसी की बढ़ती देना, दैट इज प्रमोट. कहीं नहीं दैट इज प्रमोट, राइट. नेक्स्ट इज रिवर्स. रिवर्स यानी उल्टा करना, कोई चीज का जो आपने किया है उसका उल्टा करना, दैट इज कॉल्ड रिवर्स.
Selective यानी जो आप choose करते हो, select करते हो, that is called selective, right? Okay, he has taken selective steps, so that is selective. जो पसंद किया है, एक चीज को पिकअप किया है, that is called selective. स्टेपल मीन्स व्हाट? जो रेगुलर है, जो हमेशा चलता है, जैसे आप रोज रोटी सब्जी और दाल चावल खाते हैं, दैट इज अ स्टेपल डाइट. स्टेपल इज रेगुलर रूटीन. यस. स्टेटस यानी आपका जो होता है सोसाइटी में, दैट इज योर स्टेटस. एंड देन वी हैव थर्स्ट यानी कोई चीज की प्यास, पानी की प्यास है, कोई भी चीज की जो प्यास है, दैट इज कॉल्ड थर्स्ट. Alright, so now let's solve the words. You have to match 1 to 20 with A to T. Right, I'm making this a full screen. Right, clearly visible now. So first one, bond. What is the answer? Bond is H. Connect. You have a connection with someone. Second is brand, that is K. Company name for a product, that is a brand. Company का जो नाम होता है, that becomes a brand. Next. Third one, burgeoning. G. Burgeoning is R. Growing. Something that is growing is burgeoning. Next is conglomerate. E, very good. A large company that owns smaller companies. जो छोटी-छोटी कंपनियों की मालिक होती है. That is like Reliance बहुत कंपनियों की मालिक है. It's a conglomerate, not a company. And then consistently. Consistently is P. Always and regularly. It's an adjective. Next is convince. Convince is to get somebody to do or believe something, that is convince them. Endorsement is C. Public support for something, that is endorsement. Brand endorsement, like that. Next one, fleeting. Fleeting is brief and ending quickly, जो जल्दी खत्म हो जाता है, that is fleeting. Fleeting memory. Next is ignore. Ignore is to not pay attention to. After that we have loyalty. Loyalty is faithfulness, belief in something. कोई चीज में हमारा भरोसा है, that is belief. Next is outperform, is to perform better than someone. Passion. What is passion? L. Correct. L or J? J. Strong feeling or interest in, so that is passion. 13th is phenomenon. जो normally बहुत बड़े स्केल पे होता है, लेकिन वो नई चीज होती है. So that is something unusual that happens. It's a fact. That is a phenomenon. Prevail, चल रहा है, आगे बढ़ रहा है. So that is to be common among certain groups. It is prevailing. ये आगे बढ़ रहा है, चल रहा है. लोगों के ग्रुप में वो चलन में है. Next is promote. Promote is O. To advertise is to promote. Reverse, उल्टा करना is Q. To turn around, change to its opposite. Staple. Staple is T. A basic household item, घर की item है, that is staple. Okay, we missed one. Selective. Selective is A. Intentionally choosing some things and not others. कुछ चीज को जानबूझ के पसंद कर रहे हैं, selective. Status is M. Social position. And last is L. Thirst यानी एक तो हुआ प्यास, लेकिन दूसरा मीनिंग है उसका a strong enthusiasm for something. कोई चीज के लिए बहुत strong उत्साह होता है, that is also thirst. निको जते हेडफोन्स हैं फिर चाल से डायरेक्ट साउंड. All right, so here we start with our reading passage, and here we have it. So let's read the passage and then understand the reading. All right, so to read it, Shifa, can you read the first para?
Yes, sir. From the neighborhood barber to international conglomerate, conglomerate, most business have a common goal: repeat customer, developing a committee, cliently can be more valuable than attracting new customer whose royalty to a company's product may be fitting. Okay, Brand royalty. so here from the neighborhood barber, हमारे पड़ोस का जो बार्बर है वहां से लेके टू द इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमरेट, बड़ी से बड़ी संस्था को ले लीजिए, मोस्ट बिजनेसेस हैव अ कॉमन गोल। उनका एक ही गोल होता है, रिपीट कस्टमर्स, कि एक बार आपके पास आदमी आए तो वो वापस आना चाहिए, राइट? डेवलपिंग अ कमिटेड क्लाइंटेल, क्लाइंटेल इज व्हाट, ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स, आपका पूरा जो कस्टमर बेस होता है उसको बोलते हैं क्लाइंटेल। तो आपके पास ऐसा क्लाइंटेल हो जो आपके लिए कमिटेड है, can be more than valuable than attracting new customers। नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने से ज्यादा जरूरी है कि आपके जो जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कस्टमर्स है, एग्जिस्टिंग वंस, दे आर कमिटेड टू यू, तो वो आपके बार आएंगे। हुज लॉयल्टी, उनकी जो वफादारी होगी टू अ कंपनीज प्रोडक्ट मे बी फ्लीटिंग। नए कस्टमर की आपके प्रोडक्ट प्रति जो लॉयल्टी होगी शायद वो बहुत शॉर्ट टाइम होगी, इट विल बी फ्लीटिंग। फ्लीटिंग इज व्हाट, शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर आपके पास कमिटेड कस्टमर है तो वो हर बार आपके पास ही आएगा। रिया, कैन यू रीड नेक्स्ट वन? Yes, sir. Brand loyalty is a psychological bond that once established is difficult to reverse, and it is more complicated than simply buying the same product time and again. True brand loyalty differs from what some marketing researchers refer to as a serious loyalty, a passive type of buying motivated by habit, convenience, price, and availability, but not the result of any true loyalty or passion for the actual merchandise. Convincing consumers with superior loyalty to try another brand can be quite easily. Should I continue? Yes, please continue. Products that create true customer loyalty tend to be non-essential day-to-day items, such as tobacco, beverages, candy, and beauty products, as well as luxury purchases such as designer clothes and cars. Household staples such as milk, eggs, sugar, and paper products create little brand loyalty, with most consumers just likely to purchase private labels or store brands or whatever it on sale. So brand loyalty, here is the topic, is a psychological bond, एक मानसिक रिश्ता बन जाता है that once established, एक बार अगर आपका कंपनी के साथ बन गया, is difficult to reverse। आप उसे उल्टा नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। जैसे अगर हम कोई फॉरेन कंट्री में गए और हमें वहां पे मक्खन खरीदना है, बटर खरीदना है, तो वहां पे बहुत सारे बटर के ब्रांड होंगे, और लेकिन एक बटर होगा, अमूल बटर। तो आप सबसे पहले अमूल बटर ही लेंगे क्योंकि आपका उसके साथ एक अच्छा सा बॉन्ड है, रिश्ता है। and is more complicated than simply buying the same product again, time and again। यानी सिर्फ it is not about buying the same product। true brand loyalty, ये जो सही में जो brand loyalty होती है, differs from what some marketing researchers refer to as spurious loyalty। spurious का मीनिंग क्या है? a passive type of buying motivated by habit, convenience, price and availability, but not the result of true loyalty or passion for the actual merchandise। एक ऐसा होता है जो स्पूरियस होता है। स्पूरियस लॉयल्टी का मीनिंग होता है जो आपके नजदीक में मिलता है, इजीली मिलता है, आपको कन्वीनियंट है, आपकी हैबिट है वो खरीदने की, उसकी प्राइस और अवेलेबिलिटी है, तो हर बार आप वही चीज खरीदते, दैट इज कॉल्ड स्पूरियस लॉयल्टी। लेकिन ट्रू ब्रांड लॉयल्टी अलग होती है। ट्रू ब्रांड लॉयल्टी कैसे होती है? इट डिफर्स फ्रॉम दैट एंड और any true loyalty or passion for the actual merchandise। So convincing consumers with spurious loyalty to try another brand can be quite easy। तो जिनके पास spurious यानी ये जो loyalty ऐसी होती है जो एकदम deep और true नहीं होती है, उनको एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे लाना बहुत इजी होता है क्योंकि वो लोग कहीं भी माइंड बदल सकते हैं।
प्रोडक्ट्स दैट क्रिएट ट्रू कंज्यूमर लॉयल्टी, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स जो सही में ऐसे लॉयल्टी क्रिएट करते हैं टेंड टू बी नॉन एसेंशियल डे टू डे आइटम सच एज टबैको, यानी ये जो एकदम आपको जरूरी चीजें नहीं होती है वो चीज में ट्रू ब्रांड लॉयल्टी आ जाती है, क्योंकि ये चीजें आपको रोज कंपलसरी नहीं चाहिए, जैसे टबैको है, बेवरेजेस है, कैंडी है एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स एज वेल एज लग्जरी परचेजेस सच एज डिजाइनर क्लोथ्स एंड कार्स। तो ये जो महंगी चीजें है जो हमारे लाइफ में इतनी जरूरी नहीं है, इसके अंदर ट्रू कंज्यूमर लॉयल्टी बनती है। लेकिन जो हमारे रेगुलर जो रोज की चीजें है, हाउस होल्ड स्टेपल सच एज मिल्क, एग्स, शुगर एंड पेपर प्रोडक्ट्स क्रिएट लिटिल ब्रांड लॉयल्टी, इसमें ब्रांड लॉयल्टी नहीं बनती है। विथ मोस्ट कंज्यूमर्स just as likely to purchase private labels or store brands or whatever is on sale, क्योंकि ये बेसिक चीजों में क्या होता है कि हम कोई भी चीज खरीद लेंगे क्योंकि उसमें इतना नहीं है, बिकॉज हमारा काम तो होना चाहिए, दैट इज आवर प्रायोरिटी। लेकिन कुछ जो महंगी चीजें होती है तो उसमें हमारे पास एक शौक बन जाता है, जब शौक बनता है तो वो ब्रांड के लिए आप लॉयल्टी आ जाती है। जैसे शूज है तो आप ब्रांडेड शूज पहनते हो तो हमेशा वही ब्रांड में आप लॉयल हो जाएंगे। Muskan, can you read the next one? Yes, sir. A product must have acceptable quality to establish true brand loyalty. But even top quality is not enough on its own to forge a strong connection with a consumer. Customers relate to products for emotional and symbolic reasons. People identify with the image associated with a brand, for example, as a result of a celebrity endorsement or because of the social values of the company. In addition, people consistently purchase pricey items because of the perceived status those items confer. So, can I continue? Yes. Brand loyal consumers are unlikely to defect to the competition because loyal consumers develop a preference for a product, ignore negative associations, and believe outperforms other, even when there is a little difference among brands. For example, beverage drinkers in blind taste test regularly fail to select their favored brand even though they mention taste as the primary reason for their loyalty. So a product must have acceptable quality, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए to establish true brand loyalty। अगर क्वालिटी ना हो, but even top quality is not enough on its own, सिर्फ क्वालिटी ही सब कुछ नहीं है। To forge यानी to create a strong connection with the consumer। Customers relate to the products for emotional and symbolic reason। अगर हम कोई प्रोडक्ट से कनेक्ट करते हैं तो उसमें हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, symbolic reasons होते हैं। जैसे people identify with the image associated with a brand, उसका जो इमेज है और वो इमेज, वो जो पूरा आइडिया है उससे वो ब्रांड चलता है। फॉर एग्जांपल एज अ रिजल्ट ऑफ अ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, कि कोई सेलिब्रिटी उससे कनेक्टेड और वो सेलिब्रिटी से आप कनेक्टेड हो तो आपको वो चीज यूज करके उसकी फीलिंग आएगी। और बिकॉज ऑफ द सोशल वैल्यूज ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की सोशल वैल्यू बहुत है। जैसे हमारे एग्जांपल में सोशल वैल्यू का एग्जांपल है टाटा। तो टाटा इज अ वेरी गुड कंपनी, वो कमाने के लिए नहीं करते, कुछ भी करते तो वो लोगों का भला देखते। तो अगर टाटा में बोले आदमी जॉब करता हो या फिर टाटा का कोई प्रोडक्ट खरीदता हो तो कभी भी आपके साथ दुकान से की चीटिंग हो गई मेरे से। टाटा इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सो इट हैज सोशल वैल्यूज, तो उसकी वजह से जाना जाता है। कोई कंपनी है तो जिसका एक इमेज है, जैसे एक आईफोन है तो इट इज अ सिंबल ऑफ लग्जरी। तो जब भी आप वो फोन यूज करते हो, भले वो आपको लग्जरियस फील नहीं कराता, लेकिन आपके माइंड में इट हैज दिस इमेज दैट ओ इट इज अ सिंबल ऑफ लग्जरी। इन एडिशन उसके साथ people consistently purchase pricey items, और जानबूझ के लोग महंगी चीजें खरीदते हैं because of the perceived status those items confer, क्योंकि वो चीजों की एक स्टेटस हो जाती है कि ज्यादा महंगी है तो ये मार्केट में सबसे आगे है, तो जानबूझ के ज्यादा पैसा खर्च करके लोग उसको पसंद करते हैं। अगर उसके प्राइस कम हो जाते हैं तो लोग वहां पे नहीं खरीदेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो आपको चाहिए कि मैं ऐसी चीज खरीदना चाहता हूं जो हर आदमी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए मैं ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूं। दैट इज दे परचेज प्राइसी आइटम्स। ब्रांड लॉयल कंज्यूमर्स, और ऐसे जो कंज्यूमर्स होते हैं आर अनलाइकली
टू डिफेक्ट टू द कंपटीशन, वो दूसरे कंपटीशन के पास नहीं जाते, बिकॉज लॉयल कंज्यूमर्स डेवलप अ प्रेफरेंस फॉर अ प्रोडक्ट, क्योंकि वो लोग एक आदत बना देते हैं वो प्रोडक्ट के लिए, इग्नोर नेगेटिव एसोसिएशन, और वो प्रोडक्ट में अगर आपके अंदर खामी भी है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंड बिलीव इट आउट परफॉर्म्स अदर्स, और आप मानते हो कि भाई नहीं, मेरी कंपनी, मेरा एप्पल ही सबसे बेटर है, इवन व्हेन देयर इज अ लिटिल डिफरेंस अमंग, फिर भले ही आपको उससे अच्छी या सेम चीज भी कम दाम में क्यों ना मिलती हो। फॉर एग्जाम्पल, बेवरेज ड्रिंकर्स, जो ड्रिंक करने वाले लोग हैं, उनको एक ब्लाइंड टेस्ट कराया, यानी उनके ऊपर आंखों को पट्टी बांध दी एंड उनको टेस्ट कराया कि आप टेस्ट करके बताओ कि आपका ब्रांड कौन सा है, और उनको 4 अलग अलग ब्रांड दी, राइट। They test regularly fail to select their favorite brand, और वो अपनी favorite brand को पसंद नहीं कर पाते, यानी without seeing the symbol, even though they mention taste as the primary reason for the loyalty, जबकि वो लोग बोलते हैं कि भाई टेस्ट की वजह से ये मेरा फेवरेट ब्रांड है, लेकिन उनके आंखों पे पट्टी मार के उनको 4 अलग अलग चीजें पिलाई, they don't know which one is which, means वो उनके माइंड में है कि नहीं, ये मेरा ब्रांड दूसरे ब्रांड से बेटर है। Varun, can you read next paragraph? Varun, are you there? Yes, sorry, sir. My connection is little. Brand loyalty is a worldwide phenomenon, but it is a luxury that prevails where people have more money to spend. In China's burgeoning economy, sales are soaring for certain top-of-the-line luxury cars after concerted efforts were made to promote them. At the same time, European fashion companies are taking advantage of Chinese consumers' thirst for designers' labels, selling goods worth billions of US dollars a year. Consumers become less selective about brands in economic downturns during the recession of the early 21st century. More consumers in Europe and North America turned to brands that cost less instead of the ones they preferred, and more retailers packaged goods under their own private labels. Although private labels are also influencing shoppers in South Africa and Japan, they have had little effect in Hong Kong, where people have more disposable income and therefore remain loyal to the higher priced brands. Brand loyalty is less prevalent in poorer countries where consumers have fewer choices and price is usually the priority. So brand loyalty is a worldwide phenomenon. ये पूरी दुनिया में एक लोगों को कीड़ा है, but it is a luxury that prevails. But ये ऐसी चीज है जो सिर्फ वही कंट्रीज में चलती है where people have more money to spend. जिसके पास ज्यादा पैसा है तो वहां पे चलेगा। इस वजह से अब इंडिया में, because India's economy is growing, अब जाके यहाँ पे महंगी ब्रांड्स आने लगी है। Right now we have Starbucks coffee right now, right? So India is getting a lot of international brands because now people in India have a lot of money to spend. In China's burgeoning economy, burgeoning यानी growing, जैसे इंडिया की economy grow हो रही है, क्या बोलेंगे? India's burgeoning economy. So like that, China's burgeoning economy, sales are soaring, यानी उनकी जो कंपनियों के जो sales है वो बहुत ऊपर जा रहे हैं for certain top of the line luxury cars. Now, if this is an idiom I have taught, if anybody remembers, मैंने आज क्या पढ़ू? Best quality. Yes, correct. Certainly, top of the line luxury car. Top of the line એટલે best quality luxury cars after concerted efforts were made to promote them. यानी उनको एफर्ट डाले, उन्होंने बहुत एफर्ट किए कि वो गाड़ी को प्रमोट करें, और उनकी जो महंगी लग्जरी कार्स है चाइना में वो बहुत बिक रही है। एट द सेम टाइम यूरोपियन फैशन कंपनीज आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द चाइनीज कंज्यूमर्स थर्स्ट। अभी इन लोगों को खरीदने का जो थर्स्ट है, प्यास है, उसका फायदा उठा रहा है ये यूरोपियन फैशन कंपनीज फॉर डिजाइनर लेबल्स, यानी गुची, प्राडा, ये सारी कंपनीज यहाँ पे आ रही है, सेलिंग गुड्स वर्थ बिलियंस ऑफ US डॉलर्स अ ईयर, यानी साल में करोड़ों रुपए का माल ये लोग बेच रहे हैं। कंज्यूमर्स बिकम लेस सिलेक्टिव, कंज्यूमर्स के नखरे कम हो जाते हैं अबाउट ब्रांड्स इन इकोनॉमिक डाउनटर्न। जब इकोनॉमिक डाउनटर्न यानी रिसेशन होता है तब ये लोग सिलेक्टिव कम हो जाते हैं, यानी उनके नखरे कम हो जाते हैं। ड्यूरिंग द रिसेशन of the early 21st century, जब हमारे यहाँ पे रिसेशन आया in 2008,
more consumers in Europe and North America turn to brands that cost less instead of the ones they prefer. वो खुद की पसंद की ब्रांड, महंगी ब्रांड को छोड़ के सस्ती ब्रांड्स पे गए. And more retailers package goods under their own private labels, and more retailers package goods. और retailers ने क्या किया फिर, क्योंकि उनको पता था कि वो माल बना के अगर महंगी ब्रांड का लेबल लगाएंगे तो नहीं बिकेगा, तो उन्होंने फिर खुद के प्राइवेट लेबल्स लगाना चालू किए, क्योंकि people were preferring cheaper products. Although private labels are also influencing shoppers in South Africa and Japan, ये यहाँ पे भी हो रहा है. They have had a little effect in Hong Kong, where people have more disposable income. जहाँ पे ज्यादा लोगों के पास पैसा है, वो छोटी ब्रांड में नहीं जा रहे हैं. Therefore, remain loyal to the higher priced brands. तो वही लोग महंगी प्राइस पे जा रहे हैं. So brand loyalty is less prevalent. ये कम चलन में है in poorer countries, where consumers have fewer choices and price is usually the priority. तो गरीब देशों में उनकी प्रायोरिटी होती है कि हमें सस्ता चीज मिलना चाहिए, तो वहां पे ब्रांड लॉयल्टी जैसी चीजें एग्जिस्ट करती नहीं है. So answer questions 1 to 8, true, false and not given. Here are the questions. I give you 2 minutes. So first one, international conglomerates, बड़ी-बड़ी जो कंपनियां हैं, are more successful at creating brand loyalty than small businesses are. बड़ी कंपनीज छोटी कंपनी से ज्यादा सक्सेसफुल है ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करने में. True, false or not given? ये हमारे ब्रेन में है कि ऑब्वियसली बड़ी कंपनी है तो बड़ी कंपनी ही ब्रांड बनाती है, लेकिन इन्होंने यहीं पे ऐसा कोई कंपैरिजन किया नहीं है. सो आंसर इज नॉट गिवन. इट इज, अगर हम हमारा कॉमन सेंस यूज करें तो हमें लगा अरे यार ये बात तो सही है, इट्स ट्रू, राइट, कि बड़ी कंपनी है तो ही तो ब्रांड बनेगा, तो ही तो ब्रांड लॉयल्टी आएगी, लेकिन यहाँ पे कोई कंपैरिजन दिया गया नहीं. न्यू कस्टमर्स में हैव ओनली अ फ्लीटिंग इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर ब्रांड. नए कस्टमर का इंटरेस्ट बहुत छोटा रहता है, वो कभी भी चला जा सकता है. व्हाट इज द आंसर गाइस? True. True, correct. The answer is true. Next one, brand loyalty occurs more often with household staples than with luxury items. ब्रांड लॉयल्टी घर के आम चीजों में ज्यादा होती है, लग्जरी आइटम्स में नहीं होती. उल्टा है, महंगी चीजों में जो फालतू फालतू चीजें उसमें ब्रांड लॉयल्टी ज्यादा होती है. कहां पे है? Here. Products that create true consumer loyalty tend to be non-essential day-to-day items such as tobacco, beverages and candy. यानी जिसकी हमें कोई एकदम इमीडिएटली जरूरत नहीं है. फोर्थ वन, ब्रांड लॉयल्टी इंक्लूड्स द बिलीफ. इसमें ये बिलीफ होता है that one brand outperforms other brand. आप ऐसा मानते हो कि आप एक ब्रांड जो है दूसरी ब्रांड से बेहतरीन है, बेटर है. आंसर इज ट्रू. કેવી રીતે ટ્रू થયું? It outperforms. અહીંયા લખેલું છે. Brand loyal consumers develop a preference for a product, ignore negative associations and believe it outperforms others. दूसरों से आपकी ब्रांड ज्यादा अच्छी है. Kushi, you have to answer next one. Endorsement of a product by a famous person can help create brand loyalty. जब फेमस आदमी ब्रांड को प्रमोट करता है तो वो ब्रांड लॉयल्टी प्रमोट क्रिएट कर सकता है. ट्रू, क्योंकि अगर आप वो सुपरस्टार से कनेक्टेड है, जैसे ऋतिक रोशन आपका फेवरेट एक्टर है, तो फिर कुछ भी तंबाकू, गांजा, चरस बेचेगा तो आप ले लोगे, ओ ऋतिक रोशन माय डुग्गू. सो दैट इज हाउ. सो ये कहां पे है फेमस पर्सन वाला? अगेन in addition, here people identify with the image associated with a brand, for example as a result of a celebrity endorsement. Next one, sixth one, companies can convince consumers to change their brand loyalties by lowering prices. वो ब्रांड लॉयल्टी बदल सकते हैं प्राइसेस को कम करके. नॉट गिवन, ऐसा कुछ दिया गया नहीं है. The phenomenon of brand loyalty is seen in countries around the world. ये ब्रांड लॉयल्टी का जो फिनोमिनन है, ये ट्रेंड है, वो पूरी दुनिया में देखा गया है. So that is true.
Consumers are drawn to certain brands because they believe these brands give them status. वो ये ब्रांड्स के ऊपर इसलिए खींचे चले जाते हैं बिकॉज वो मानते हैं कि ये ब्रांड से उनको स्टेटस मिलेगा. हेलो को सुतेला से बोलता हूं कि ऑनलाइन लोगों को एनीवन True. यस ट्रू. आप वो चीज खरीदते हो तो आपके माइंड में बहुत बड़ा इमेज चलता है, राइट? कहाँ पे है वो लोग? या here it is somewhere. Here, people consistently purchase pricey items because of the perceived status those items confer. आपको जो status देती है means these brands give them status, right? Okay, now we'll start with the word here. So word families, the first word we are learning is a noun. Consistency. Consistency is what? जब आप एक चीज को regular effort से करते हैं, that is consistency. Example, brand loyalty is about the consistency with which consumers buy a certain brand. कितनी consistency के साथ एक ही brand का product खरीदते हैं, that is called brand loyalty. Adjective है consistent. Consistent is a quality. A person is consistent. Not all consumers are consistent when it comes to buying certain brands. हर consumer consistent नहीं होता है, वो कभी-कभी अपनी brand change भी कर सकता है. और adverb है consistently, यानी same efforts के साथ. A company wants consumers to consistently buy its brand. हर company चाहती है कि उसका ग्राहक जो है वो consistently लगातार उसी की brand को purchase करे. It's consistently. Next is loyal. तो quality है loyalty यानी वफादारी. A company wants the loyalty of its customers. उसको वफादारी चाहिए. Loyal is वफादार. वफादारी नहीं but वफादार. A customer who feels loyal to a certain brand will always buy that brand even when the price rises. अगर दाम बढ़ेंगे फिर भी लोग उसी का प्रोडक्ट खरीदेंगे क्योंकि उसको उसके प्रति एक वफादारी महसूस होती है. And loyally यानी वफादार रूप से customers may loyally buy all the brands of a particular company. Next is passion यानी चाहत. The quality of passion is a noun. Passion यानी चाहत. Customers may have a passion for a particular brand. लोगों की एक चाहत होती है. Adjective है passionate, शौकीन. A person who feels passionate about a brand tends to ignore any problems the product may have. तो product की कोई भी quality को ignore करेगा. And then passionately. Passionate यानी वो मेहनत और लगन के साथ, चाहत के साथ, right? So that is passionately. Loyal customers passionately defend their favorite brand. वो खुद की brand को defend करते हैं. That is passionate. Next is prevalence यानी चलन, कोई चीज का चलन. It's prevalence. The prevalence of certain brands is a result of the effort companies put into promoting them. कुछ कंपनीज का जो चलन है, हर जगह पे वही ब्रांड चलती है, वो किस चीज का रिजल्ट है? वो कंपनियों की मेहनत है उसको खुद को प्रमोट करने में, जिससे वो लोग चलते हैं. प्रिवेल यानी आगे बढ़ना, चलना. ब्रांड लॉयल्टी यूजुअली प्रिवेल्स ओवर प्राइस. प्राइस के ऊपर ब्रांड लॉयल्टी का जीत होता है. And prevalent यानी चलन वाली चीज. Brand loyalty is more prevalent in places where people have more money to spend. ज्यादा पैसा है तो फिर आप खुद की ब्रांड पे ही जाएंगे. Next is selection यानी choice. So now larger stores can offer a wide selection of brands. Large choice. Select यानी पसंद करना. People may select a brand that they believe gives them status. लोग मानते हैं कि उनको स्टेटस मिलती है, वही ब्रांड को सिलेक्ट करें. सिलेक्टिव जब आप नखरे करते हो पिक करने में, सिलेक्टिव, इट्स वेरी सिलेक्टिव, बहुत चूजी है पर्सन. सम पीपल आर वेरी सिलेक्टिव अबाउट द ब्रांड्स दे बाय. बहुत नखरे होते हैं एंड सिलेक्टिवली सोच समझ के आप पिक करते हो. सम पीपल शॉप सिलेक्टिवली, सोच समझ के बहुत सिलेक्ट करके पिक करते हैं. Whereas others just buy whatever they see on the shelf.
शेल्फ पे जो दिखाई दिया उठा ली। वैसे लोग होते हैं और एक होते हैं जो सिलेक्ट करते हैं कि शैम्पूस की 50 ब्रांड है तो आई सी एवरी शैम्पू एंड देन आई डिसाइड अच्छा ये वाला चाहिए, ड्रेस में चाहिए। नेक्स्ट इज थर्स्ट। थर्स्ट मींस तरस, प्यास। Now, as long as there is a thirst for luxury items, लोगों को लग्जरी चीजों की जो भूख है वो रहेगी, कंपनीज विल कीप प्रोड्यूसिंग दैट, तब तक कंपनी बनाती रहेगी। और कोई चीज के लिए जो भूख रहती है उसको भी बोलते हैं थर्स्ट। वो some consumers thirst for the newest of everything, हर चीज के लिए, नई चीज के लिए वो लोग ललचा जाते हैं, they thirst for it. An adjective is thirsty. In a burgeoning economy, यानी ऐसी इकोनॉमी जो बढ़ रही है, consumers are thirsty for products that were not available to them in the past. Consumers कैसे हैं? वो ऐसे प्रोडक्ट के लिए प्यासे हैं जो उनको पास्ट में नहीं मिले। And the adverb is thirstily, यानी प्यासी रूप से। People shop thirstily for new products that appear on the market. लोग ऐसे पागलों की तरह शॉपिंग करते हैं। और प्यास बुझाना तो बोलेंगे quench your thirst. Quench your thirst यानी आपकी प्यास बुझाना, right? The water will quench your thirst, यानी ये पानी आपकी प्यास को बुझाएगा। तो thirst is प्यास, quench यानी बुझाना। So quench your thirst, right? All right, now choose the correct word family member from the list below to complete each blank. So we have some options here and you will select the right one. All right, so first one. In promoting their brands, companies try to create a dash for their products. क्या create करते हैं? Correct. Companies try to create a thirst for the product so that large number of people will want to buy them. लोगों को बड़ी मात्रा में ये खरीदने की चीज जरूरत पड़ेगी. Consumers who make purchases dash will choose the brands that they feel are the best ones. जो सोच समझ के खरीदते हैं उनको. So consumers who make purchases selectively will choose the brands that they feel are the best ones. Therefore, companies try to create an image for their brands that is attractive to consumers. तो ऐसी image create करने की try करते हैं जो लोगों को पसंद आए, वो हमें अच्छी लगे. They want their brands to appear exciting. उनकी brand बहुत exciting है. If consumers feel dash about certain brands, कैसा feel करें? Passionate. If consumers feel passionate about certain brands, then they are likely to be dash in buying them. तो क्या करेंगे? Regularly खरीदी करेंगे. They're likely to be consistent. Yeah, right. So they are, if they want their brand to appear exciting, if consumers feel passionate about certain brands, they are likely to be consistent in buying. When a company introduces a new products to the market, dash customers will buy them because they already feel good about the company's brand and trust them. कैसे लोग? Loyal, correct. So that is loyal. So loyal customers will buy them because they already feel good about the company's brands and trust them. Companies that are successful in creating brand loyalty dash in the market. वही market में चलेगी. Companies that prevail, correct. Companies that are successful in creating brand loyalty will prevail in the, वही company चलती है. All right, so we did these and now read the sentence and write a definition for each underlined word. You have to write the definition. So यहाँ पे first one है, the company introduced a new car that outperforms other similar cars. Outperform નું meaning શું થયું અહીંયા? બીજા એવી કાર બનાવે છે બીજા કરતા સારી ચાલે છે. So it performs better. This company is very good at promoting its brand. પોતાની brands ને promote કરવામાં બહુ સારી છે. And its products always outsell the competitors. What is the meaning of outsell? એના competitors કરતા વધારે કરે છે, વધારે વેચે છે. So that meaning sell more or sell better.
આઉટ નું મીનિંગ ખબર પડ્યો? આઉટ નું મીનિંગ પરફોર્મ, કોઈ કરતા વધારે સારું પરફોર્મ કરો, આઉટ પરફોર્મ. સેલ કરતા વધારે સારું સેલ કરો, that is outsell. This company's products are very popular and its loyal customers outnumber those of other companies. આના customers પેલા લોકો કરતા વધારે મોટી આંકડામાં છે. So they are in greater number. Have it clear? What is the meaning we learned? Outnumber, outsell and outperform. Okay, so final part of the test here. Listen to the talk and complete the notes below. Write no more than one word. So 4 questions are there for this listening. Creating brand loyalty. Make your brand seem special. अपने brand को special बनाए. Customers want to feel that your brand gives them dash. उनको feel करना है कि उनकी आपकी brand उन्हें क्या देती है. Get dash from famous people. उन्हें famous लोगों से क्या मिलता है. Give the idea that brand is bought by dash people. वो idea देना है कि brand, ये brand कौन खरीदता है. Make customers feel dash about your brand. Customers को आपके brand के बारे में क्या feel करा. So listen and answer these 4 questions. Unit 7, Business, Brand Loyalty. Listen to a lecture in a marketing class. We'll talk today about promoting new products. Your main goal in promoting your products is to create brand loyalty, a bond between you and your customers. That way, your customers will keep coming back to you. How do you do this? The main point is to make your customers feel that your brand is somehow special, so that they'll feel special when they buy it. They want to feel that using products with your brand gives them status. A common method is to get endorsements from famous people. Customers will think, if I use the same brand as that movie star or athlete or television actor, then I'll be as special as that person. This also gives the idea that your brand is bought by selective people, which makes customers feel very good about buying it themselves. If you can make customers feel passionate about your brand, then they'll always buy it, whether your products are common household staples or expensive luxury items. This is what you want, a brand loyalty that's hard to reverse. Very sweet, lovely session. Make your brand seem special. Customers want to feel that your brand gives them what? Status. Status. Get dash from famous people. What do you get? Endorsement. Exactly. So when successful people are promoting your brand, it means you are doing good. Give the idea that the brand is bought by dash people. Selective people. यानी कुछ अमुक लोग ज खरीदे छे. Make customers feel dash about your brand. Passionate. Correct. Right? Lovely. So that's it. Okay. So that was the listening part. Look at, we have a pie chart here, and here we have question. Are you loyal to any particular brands? Why and why not? Why do you think celebrity endorsements convince people to buy certain brands? Because they get money out of it, right? So that is the end of the vocab session.